is classroom management. Classroom management is one of the most important topic for the teachers. I think it will be very fruitful for all of us if we consider about the topic and we learn one by one. First of all, we will know what are the major contents of classroom management. The major contents inside classroom management are introduction, classroom management, its objectives, why classroom management is important, then what is a strategy. हम लोग क्लासरूम में क्या स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है ताकि क्लासरूम फेल में मैनेज हो। नेक्स्ट वन क्लासरूम रूल, क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज, टिप्स टू मैनेज प्रॉब्लम बिकॉज समटाइम्स वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम। सपोज दैट three teachers are standing outside and two students are listening in the class. We face a lot of problems. Even parents are the problem. So how can we invite? How can we try to stop suspects of misbehavior in the classroom from the student side? Next one is reference. So we will discuss one by one on this topic. Introduction. It is introduction of the classroom. Students are sitting in the classroom. Benches are arranged properly. All the students are waiting for the teacher. Effective classroom management required. What things are required for effective classroom? In that effective classroom, first of all, there is need of awareness, patience, good timing. Suppose that first period is of 10 a.m. to 10:40. It is not only for the time of the students. The teacher should also enter in the classroom on time. But sometimes we see that teachers go to the classroom late and try to come out without completing the whole period. It means in that situation, they are going to do injustice with the students. So we should keep patience among the students. The students should also listen the contents of the teacher patiently. In this way, there is nothing easy about studying a large group of English level. There are so many issues related to classroom management. Suppose that the height of benches are not properly. At best, we should arrange the bench in the classroom. First of all, we should keep the benches, we should manage the benches which are in short in height. Then, next week, more dollar. In this way, classroom can be arranged. Next one is, suppose that someone student is in D. I would like to make suggestion from our honorable Madhu sir. Suppose that someone student is in D and he or she is sitting in the corner of the classroom. How can we manage with such types of students? I am delivering my lecture from here and the student is sitting in the corner. Make possible to listen all the statement which is going to be delivered by me to that student. So what can we do? We are student.
कोई स्टूडेंट अगर पढ़ा कम सुनाई पड़ता है और वो कॉर्नर में बैठे हुए क्लास में और टीचर सेवा में रिपीट कर रहे हैं आपके लेक्चर को, अगर वो स्टूडेंट को सुनने में प्रॉब्लम है, हम लोग जान रहे हैं हम कैसे मैनेज करेंगे। तो इन दैट केस we have to fix the seat of the students on the front so that the student can listen their teacher in proper way. Other situation may come before the teacher that if the student is suffering from eyesight problem, कोई ऐसा स्टूडेंट है तो देखने में दिक्कत है, किसी के पास निकट दृष्टि दोष है तो किसी के पास दूर दृष्टि दोष है, कोई आगे से बैठ करके नजदीक में नहीं देख सकता है, उसको लगता है कि दूर से बैठेंगे तब उनको क्लियर दिखाई देगा, और किसी को लगता है कि हम आगे बैठेंगे तब दिखाई देगा। तो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू फाइंड आउट द probability of students. If the students are facing in eyesight, we have to manage the seat properly. Understand proven exam theory that provide a foundation for quality classroom management. हम लोग को समझने की जरूरत है कि हम क्लासरूम को क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करें, क्लासरूम कैसे क्वालिटी मैनेज हो। बच्चे बहुत ऐसे हैं जिसको हम लोग जानते नहीं है और बच्चा कम सुनता है तो उसको आगे बैठाएंगे, किसी को कम दिखाई देना है आगे नजदीक में उसको दिखाई नहीं देता है, दूर से दिखाई देता है पीछे कर देंगे, जिसको दूर से दिखाई नहीं देता है उसको आगे कर देंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों? क्लासरूम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? सपोज दैट क्लासरूम इज नॉट मैनेज्ड बट वी हैव टू टीचर आवर लेक्चर फॉर 14 years. It may not be possible, it may be possible, but what will be feedback, what will be output? If classroom is not managed and we have already delivered 14 years lectures, it means we have already spent 14 years. Our students are not capable to get what are being provided by the teacher. In that situation, so there are so many things which have been discussed earlier. First of all, in this case, satisfaction and enjoyment in teaching are dependent upon the leading the students to cooperate. सबसे पहले बताता है कि enjoyment होना चाहिए क्लास में। अब टीचर जा रहे हैं टेंशन में, क्लास को टीचर जा रहे हैं suppose that teachers are in the classroom, they are in tension that someone even I will sit upon the bench, I have no capacity to deliver my lecture, having a student in the classroom for 14 years, I will sit on the bench. Someone is serious student may be also present in the classroom, they can capture your video, they can bring you tension. So for this we have to first of all make our classroom enjoyable. We should take cooperation from the student side. We should take cooperation from our student side. How can we take cooperation from our student side? How can we take cooperation from our student side? हम कैसे ले सकते हैं? How can we take cooperation from our student side to make enjoyable classroom? तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनके बारे में अगर हम जानते हैं की किसका क्या क्रिएटिविटी है, इसमें इंटरेस्ट है, तो उसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करेंगे कि भाई इस पर कुछ बोलो। जैसे मान लिया कुछ पढ़ाई से संबंधित कुछ कंप्यूटर बेस्ड उसकी जानकारी है तो उससे मतलब जो कुछ भी है। If you are taking a class of history,
How can you ask me questions regarding related to computers from the student? हिस्ट्री कम से मैं बता रहा हूँ It is clear that if you are taking class of history, you should make your class academic in history part. हिस्ट्री बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो है ना उससे जो पुरानी फिल्में हैं जो कि इतिहास बेस्ड है उससे समझ पूछेगा कि आपने देखी है कि नहीं, जैसे मंगल पांडे जैसे ये 1857 में जो What do you do after 10th? Header. This is I am in army. Mahfuz sir, आप कुछ कहना चाहें? उन्होंने पूछा उन्होंने कहा कि सर मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। ये बताओ तो पाकिस्तान में तो लोग It means we have doubt on our students. So now either our students belong to any background, any community. Once he is going to take his job in army, there he thinks totally about his motherland. That's why in such situation in the classroom, being a teacher, we should not put question mark upon the student regarding nationalism. हिस्ट्री पढ़ाने का सबसे अच्छा सर हमको The name of a person who is on board against any country. Sir, if that was in a but I am telling you, history can be taught very easily in a very interesting way by seeing the film. Suppose that Bajirao Mastani, I was not interested in the history of Bajirao and Mastani, and then I just visited that film, I just gathered lots of information. Yes. But now the concept of classroom management. Number one is design. Design means arrangement of benches, table, desk, etc. in the classroom. तो सर सबसे अच्छा सवाल हम जैसे लोग हैं जो गांधीवादी सिद्धांत के समर्थक हैं और सामने वाला जो है वो पूरी तरह से हिंसावादी मतलब माने और ऐसे सोच तो रखता है और वो मेरे को बोलने नहीं दे रहे तो वैसे बच्चों से हम लोग कैसे निपटे हैं आप समझ रहे हैं मेरा हिसाब मतलब कि एकदम वो सारा को ऑनलाइन वजह से गाड़ियाँ दिखाओ ये Mahfuz कहना चाह रहे हैं सर कि गांधीवादी विचार लाहौर 1929 में रेडिकल बन गए थे और गांधी जी ने कहा था कोई कौन गांधी विचार ठीक है I think on regarding this question, we teachers should accept all of the ideology. Sometimes according to time, according to situation, we have to follow the path of Mahatma Gandhi, follow the path of Gandhi, and sometimes we think that we need to be follow the path of Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose. He should accept it. जैसे देखिए महात्मा गांधी बनिएगा कुछ बच्चों को करिएगा वीडियो बनेगा कैलकुलेटर मिलेगा क्लियर अगर बच्चा सीटिंग में आया उसको चार के पेन में उठा के से चलेगा कैलकुलेटर तो फिजिक्स महात्मा गांधी बनने से क्या मतलब? वही गांधी कोई बन नहीं सकता है वैसा आचरण अपना आचरण ऊंचा जब कर लीजिएगा तो बिना मारे बिना डांटे भी बच्चे पर आपका प्रभाव पड़ेगा बुद्ध का प्रभाव अपनी बात पर पड़ा था जो कहे ना कुछ बच्चे अपनी बात
टेक्निक